guys, welcome back to our channel. I am Jolly and I am Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो के लिए हमें बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे एंड फाइनली आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं. पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं. तो वीडियो का टाइटल है द किंगडम ऑफ अल्लाह, नो योर क्रिएटर. एंड गाइज, इस वीडियो के लिए सच में बहुत टाइम से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी और हम खुद सोच रहे थे कि हम रिएक्शन देंगे, बट फाइनली आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं और साथ ही में इसमें इतने सारे व्यूज हैं. हाँ. तो बहुत 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 अमेजिंग होने वाली है मुझे लगता है ये वीडियो. सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. बस हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Who is Allah? We want to refresh our iman. We want to be attached to our Creator. We want to fear nobody but Him. We want to please none other than Him. So who is Allah? Come with me to Surah Al-Hadid, chapter 57 of the Quran, where Allah, He says, introducing Himself to us, لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. He is Allah who has the kingdom of the heavens and the earth. يحيي ويميت. He alone is the one who gives life and death. وهو على كل شيء قدير. And He is able to do whatever He wishes. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Everything in the heavens and the earth glorify Allah, and He is the most mighty, the most wise. Ya Allah, هل تعلم له سمية? Do you know anybody who shares even one of these characteristics with Allah? Who is Allah? Come with me to chapter 6 of the Quran, Surah Al-An'am. Allah says, وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. He has the keys to the unseen. No one knows them except Him. ويعلم ما في البر والبحر. And He knows everything that is on land and everything that is within the sea. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. And there isn't a single leaf that falls from any tree except that Allah has knowledge of it. ولا حبة في ظلمات الأرض. And there isn't even a grain within the darknesses of the land. ولا رطب ولا يابس. Nor is there anything moist or anything that is solid إلا في كتاب مبين. Except that Allah has knowledge of it. It is written within a clear record. La ilaha illallah. We bring to your attention, dear brothers and sisters in Islam, the description of just one of Allah Almighty's creation. He is an angel, the chief of the angels, Angel Jibreel alayhi salatu wassalam. The Messenger sallallahu alayhi wasallam saw him in his true angelic form. Ahmad narrates in his Musnad that Abdullah ibn Mas'ud, the companion, he said, رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. He says the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw Angel Jibreel in his true angelic form, and he had no less than 600 wings, and every one of those wings was huge enough to fill the horizon and cover the skies. One wing spread out covers every cloud, covers every star, covers the sun and the moon, covers every inch of that blue sky that we see. One wing. What then can you make of 600 wings? And if this is the majesty of just one of Allah Almighty's creation, what then can you make of the beauty and the majesty of the Creator Himself? La ilaha illallah. I bring to your attention, dear brothers and sisters, yet a second creation from Allah Almighty. This is the description of one of the angels who are carrying the throne of Allah. Abi Dawood narrates in his Sunan on the authority of Jabir that the Messenger sallallahu alayhi wasallam said, أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام.
He said, alayhi salatu wasalam, Allah has given me permission to give you, O Muslims, a description of just one of the angels that are carrying the throne of Allah. He said the distance between his earlobe and his shoulder is the distance of 700 years worth of travel. If that is the distance between his ear and his shoulder, a hand span of a distance for us human beings, what then about the size of the rest of this angel? What then about the enormity of the rest of his body? If this is the size of one of the angels who are carrying the throne of Allah, what then about the enormity of the throne of Allah itself? And if this is the size of the throne of Allah, what then about the Lord and the King of that throne? The ni'mah of seeing. Today we've forgotten. Today you and I think what? That to see I need a pair of eyes. You're wrong. Because there are millions around the world that have eyes, but they can't see. It is Allah that allows you to see. Today you think to hear, I need a pair of ears. You're wrong. Because there are millions around the world that have ears. They're stuck on their heads, but they can't hear, my brother. It is Allah that allows you to hear. Today you think to walk, I need a pair of legs. You're wrong. There are millions around the world that have legs, but they can't walk. It is Allah and Allah alone that allows you to walk. Allah, not you. Allah, not you. Allah doesn't need you, my brother. Allah doesn't need me. Allah doesn't need us. And we have to understand, because this is Aqidah. You have to know this so that when you worship, you are always humble. When you worship Him, you never have pride. When you worship Him, you never have arrogance. Because you know, at any given point in time, I am where I am only through His mercy. Only through His rahmah, I am where I am. Not because of your own actions. And to know with depth, with yaqeen, with certainty, that Allah, the King of Kings, doesn't need anyone. He doesn't need anyone, my brothers. Wallahi, everything you see around you, everything. Today, the Muslims have so much fear in their hearts. Fear of the kuffar, fear of the West, fear of laws, fear of regulations, fear of this and fear of that. But to know that Allah Azza wa Jal is not in need. Wallahi, my brothers, wallahi, I take an oath by Allah. You have to come to terms. You have to come to believe with certainty that every single human being, whoever lived, whoever's living, and whoever is to come and live on this earth, wallahi, every single human being, every single jinn, every single animal that walks on this earth, every single bird that takes the flight in the sky, every single fish that swims in the oceans of Allah Azza wa Jal, wallahi, every single land, every single country, wallahi, with all their governments and all their military force and all their might and all their science and all their money and all their know-how, all with the exception of none, every country, every tree, every grain of sand, every mountain, every river, every ocean, wallahi, every star, every sun, every moon, every single planet, every single angel, the billions and billions and billions of angels, all of them, with the exception of none, Mikael, Jibrail, Israfil, all, the first heaven, the second heaven, the third heaven, the fourth heaven, the fifth heaven, the sixth heaven, the seventh heaven, the ocean above it, the eight that carry the throne of Allah, the hearts of Allah, all are dead, all are dead. Nothing moves, nothing stops, nothing makes, nothing breaks, nothing gives, nothing takes, nothing rises, and nothing falls, nothing harms, and nothing benefits in Allah. And until this yaqeen and faith is in your heart, that nothing, that everything is dead, everything.
except Allah. Allah doesn't need anything, anyone. No prophet, no angels, no jinn, no ins. We need him. He's al-Hayyul Qayyum. He's the ever living. So you might say, brother, I'm alive. What's so special about that? I'm living. Yeah, but your living is dependent on his existence. He's the first with no beginning. He's the last with no ending. He is Allah. He is Allah. Al-Malik. He's the king. He's the king. He's the one who on the day of judgment, when everything will come to an end, when Allah Azza wa Jal will order the destruction of every living creature, when Allah Azza wa Jal will order the destruction, the death of every human, of every animal, of every jinn, of every angel, until there comes a point where there is absolutely nothing in existence except Allah. And Allah will call out, أين الملوك? أين أبناء الملوك? Where are those kings? Where are those kings who thought they were kings? Where are the sons of those kings? Allah will call out, where are the tyrants? Where are the gangsters? Where are the boys that thought he was something? Where? أين أبناؤهم? Where are their children? Allah will call. Where are they? And then he will ask, لمن ملك اليوم? To who is the kingdom today? Who? Nothing will answer. Allah Himself will answer. Today it's to Allah, the one and only. Allah asks, ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض? Don't you see, O people, that everything in the heavens and the earth prostrates to Allah? وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, and so does the sun, and so does the moon. وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ, and so do the stars, and so do the mountains. وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ, and so do the trees, and so do the moving creatures. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ, and so do many people. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ, and many people will be punished, Ya Allah. Isn't that amazing? From all of creation that's in existence, they are all in submission, all in sujood to Allah, whether we see it or realize it or not. And the only exception is a minority who happen to be from the weakest of all creation. He is man. So guys, वीडियो बहुत सच में guys हम पे सच में वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए जिस तरह की ये वीडियो थी. थैंक यू सो मच जिसने भी ये रिकमेंड करी, क्योंकि इतनी पावरफुल थी, इतने ज़्यादा पावरफुल थी कि मतलब हम पे वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए. क्योंकि स्टार्टिंग से ही वीडियो बहुत अच्छी थी, बट जो बीच में जिस तरह वो बहुत मतलब अग्रेसिव मतलब समझा रहे थे वो, मतलब जिस तरह नॉट एग्रेसिव, मतलब लाउड हो गई नो, वो जिस तरह बोल रहे थे मुझे वो लाइक यू नो उस चीज को सुन के यू नो वो चीज फील हो रही थी और गूज बम्स भी आ रहे थे. जिस तरह वो बोल रहे थे ना वो हम चीज फील कर पा रहे थे. एंड एक और चीज इस पूरी वीडियो में उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि सब कुछ गॉड है एंड गॉड में ही सब कुछ है. मतलब और जो कि रियलिटी है यही था कि हर चीज में, जैसे वो बोल रहे थे ट्रीज बर्ड्स माउंटेन्स, सब चीज में वही है, वरना ये सब चीजें नहीं होती. इनफैक्ट जो वो बोल रहे थे प्लैनेट्स वगैरह सब में कुछ हर चीज में, मतलब एक अगर पत्ता भी हिल रहा है ना तो वो भी हमारे गॉड की वजह से. अदरवाइज मतलब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होगा अगर
मतलब कुछ भी हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। और जैसे उन्होंने बोला था, आई थिंक एंजल की बात की थी, जिनका आई थिंक उनके विंग्स की बात की थी, एंजल्स के विंग्स की बात की थी कि वो 600 है समथिंग, एंड शोल्डर से लेके अर्थ तक 700 इयर्स का डिफरेंस। मतलब मतलब सच में सोचने वाली बात है कि बहुत। मतलब कितना ज्यादा। फिर वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, सोचो जब इसमें इतना डिफरेंस है तो पूरी बॉडी कितना होगा, लाइक तो कितनी मतलब बड़ी हम- बॉडी होगी हाँ। ऑब्वियसली, वो हमारे सोच, हम उतना सोच भी नहीं सकते। मतलब इस वीडियो में हम बोलने के लिए सच में गाइस बहुत सारी बहुत अभी भी कुछ। चीजें हैं कि हम और बोले कि लाइक उन्होंने जब ऐसे बोला, लाइक एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने ना प्रॉपर चैप्टर का वो हाँ, लेके हाँ। बताया कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि व्हाट इज दिस। जब वो बोल रहे थे ना कि हाँ। अल्लाह कौन है, हाँ। मतलब हु इज अल्लाह, तो उन्होंने वो कोट करके बताया कि इन्होंने इसका आंसर इसमें दिया है, कि खुद लिखा हुआ है ये चीज कि ये है। तो मतलब वही यार सोच के सच में ये वाली मतलब सच में सोच के लगा कि हाँ सब चीज में गॉड का प्रेजेंस है, तभी जो ये चीज़ नहीं हो मानता रही है। जो नहीं मानता उनको ऐसी वीडियोस तो दिखानी चाहिए। हाँ। और एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी कि काफी लोगों के पास, मतलब जैसे इन्होंने बोला था कि लोगों के पास आईज हैं, लोगों के पास सुनने के लिए कान है, बट स्टिल वो वर्क नहीं, मतलब क्यों, मतलब वो सब अल्लाह की तो वजह से है, वो गॉड की वजह से है कि अगर, क्योंकि वो जब उन्होंने लाइन बोली थी ना ये वाली कि आईज, पैर है बट चल नहीं सकते, आंख है बट देख नहीं सकते, कान है बट सुन नहीं सकते, बिकॉज उसमें परमिशन ही नहीं है, काइंड ऑफ ऐसे करके बोला था जो वर्ड। बट नहीं, वो जो था वो मुझे बहुत क्लिक करा था जो चीज़। बट गाइस सच में वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है हम पे। और आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक